नमस्कार बच्चों, we are in the chapter not for profit organization. Not for profit organization, right? So what are things we learned in the previous class? We learned the meaning of not for profit organization. That is, it is a voluntary organizations created to provide services to the members and to promote art, culture, sports. Isn't it? The main aim of NPO is to not to earn profit, to provide services. Isn't it? After that, what are the accounts we have to prepare? We have to prepare income and expenditure account, and after that we have to prepare receipt and payments account. So while solving a comprehensive problem, we have to learn some treatment while before solving the comprehensive problem. What are the treatment we have to do before the comprehensive problem? The first treatment is treatment of sports fund. After that, treatment of subscription. Then consumable items. So these are the major items we have to treat. We have to learn how to treat these things, and after that we can move to the comprehensive problem, right? So let's start with fund. How to deal with sports fund? How to deal with other forms of fund? Normally fund-based account is created to meet a particular project. For example, a major project is to conduct sports, or major project is to conduct match. So instead of separate the things, we have to create a fund, and we have to add all the incomes and less all the expenses with the fund. We can get the actual amount. So how to deal with sports fund, right? So sports fund is a liability. Sports fund is the liability. So it appears in the liability side of balance sheet. So where we have to post the sports fund, we have to post in the liability side of the balance sheet, right? So let's start the problem. I read the problem here. Show how would you deal with the following items in the final account of a club, right? Sports fund 35,000, sports fund investment 35,000, income from sports fund investment 4,000, donation for sports fund 15,000, sports prize awarded 10,000, expenses on sports events 4,000, right? So एक क्लब का स्पोर्ट्स फंड का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. एक क्लब हमारा एक क्लब है, उसमें स्पोर्ट्स फंड वी आर हैविंग 35,000. सो स्पोर्ट्स फंड, हाउ टू डील विद स्पोर्ट्स फंड, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. For that we have to prepare balance sheet. Balance sheet को फॉर्मूला तो आप जानते होंगे. This is balance sheet of club. Balance sheet, right? You know we have two sides, liability side and asset side. As I said earlier, sports fund is a liability, so we have to post in the liability side. Sports fund. Sports fund. What is the amount? 35,000 is the amount, right? What is the amount of sports fund? Sports fund is 35,000. अब बताइए, आपके पास फंड है, आप फंड को आइडल रखेंगे कोई फायदा होगा? It will not generate income, no. So instead of that, we have to invest that fund in somewhere outside. So फंड को हम लोग ऐसे ही आइडल रखेंगे तो उनको it will not give any return. So instead of keeping the fund idle, we can invest somewhere. So इनको हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं. So it will be assets. Sports fund investment. We invested somewhere in the market, right? So invested how much? 35,000. Sports fund is a liability. That's why we
posted in the liability side, and we invested the sports fund somewhere in the market, so it becomes the investment, so it becomes assets, right? Next, after some time we got some income. So we invested somewhere, no? कहीं पे invest करने से वहाँ से income मिलेगा, dividend मिल सकता है, interest मिल सकता है. So by the way of interest, we are getting income from the investments. How much we got? See the problem? We got 4,000. So we have to add income from investment. Income from investment is 4,000. So we have to add 4,000. Clear? Income को add ही करना है. Simple. Everybody know. Second, donation. So as we are running a club, we got donation from outsiders. Donation भी income है. So क्या करना है? Income को add करना है कि less करना है? You know, income को add ही करना है. Donation is the income. So we have to add donation also. So donation for sports fund we added with the sports fund. So donation we got how much? 15,000. Right? After that, see the problem. Sports prize awarded. Sport हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं. Sport हम लोग पास पैसा था 35,000 रुपीस. इनको इन्वेस्ट कर दिए थे बाहर. फिर उनसे हमको इनकम मिला 4,000. फिर डोनेशन मिला हम लोगों को 15,000. फिर स्पोर्ट्स फंड, व्हाई वी क्रिएटेड स्पोर्ट्स फंड? टू कंडक्ट स्पोर्ट्स, नो? सो स्पोर्ट्स कंडक्ट कर रहे हैं, स्पोर्ट्स कंडक्ट करेंगे तो प्राइस देना पड़ेगा. प्राइस इज द एक्सपेंसेस फॉर द क्लब. सो एक्सपेंस को क्या करना है? यू नो वेरी वेल, एक्सपेंसेस शुड बी डिडक्टेड. सो डिडक्ट करना पड़ेगा एक्सपेंसेस को. प्राइज इज अवार्डेड. प्राइज इज अवार्डेड. How much? See the problem? 10,000 is given. I put into the bracket. Okay. After that, to conduct sports, we may spend some expenses. Okay, we have to make a pavilion. We have to arrange all these things. We have to make arrangement for sports events. So by the way, we got some expenses. So expenses cost rupees 4,000. This is also expenses. Very easy one, no? Initially we got sports fund 35,000 rupees, and after that we invest somewhere in the market. By the way, we got income from them 4,000. By the way, we got donation also, and we conduct sports. So by the way of conducting sports, we have to give prizes for that. So there is the expenses that's why we deducted that amount, and expenses. Arranging the things, we spend some amount. By the way, we spend 4,000. So what is the net amount? 35,000, 50,000, 54,000 is the income. 54,000 minus 14,000. So 40,000 is the balance. Here we need not to tally the balance sheet because it is some part of the balance sheet. It's a part of balance sheet. Some more item is there. So no need to tally the balance sheet. We are learning the treatments of sports fund. Right? Very easy, no? In CBSE exam, this type of question may be asked for 3-mark question. Very easy to score. Isn't it? With sports fund, we have to add income. We have to add donation as it is both are income. And we have to less prizes awarded and we have to less expenses. Right? So that's all. It's a very easy problem. One more problem we are going to learn in the part of sports fund or match fund like that. In part of match fund or any other fund. Okay. So let's start. I read the problem here. Show the following information in financial statement of not-for-profit organizations. Prizes awarded 20,000. Prize fund as on 31st March 2016 40,000. Donation for prizes received during the year 15,000. 10% prize fund investment as on 31st March 2016 40,000. Interest received on prize fund investment 3,000. बच्चे एक क्वेश्चन को अब आराम से रीड करिए, कुछ समझ में आ रहा है?
प्राइजेस ऑफ ऑर्डर क्या करना है आपको पता है, प्राइस ऑफ ऑर्डर इज द एक्सपेंसेस लेस करना है, प्राइस फंड इज द इनिशियल अमाउंट, डोनेशन क्या करना है आपको पता है, डोनेशन क्या करना है, यू टू ऐड एज इट इज इनकम, देन 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट दिया है, ये 10% मतलब क्या है, दैट इज इंटरेस्ट, आप एक फंड को इन्वेस्ट करेंगे उनका साल आखिरी में आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा, इट डिनोट्स द इंटरेस्ट। After that, interest received on price fund investment is given 3000. So अब जस्ट पहले एक प्रॉब्लम हम लोग किए थे, ऐसे ही प्रॉब्लम है, बस एक इन्वेस्टमेंट के एक इंटरेस्ट एक एडजस्टमेंट वाली एक है, उसको हम लोग ट्रीट करना है। सो मैं कर रहा हूँ, मेरा साथ साथ आप भी अपना जो रफ कॉपी में करना स्टार्ट करिए, राइट। सो एज यूजुअल वी हैव टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। दिस इज बैलेंस शीट। Balance sheet has how many sides? No, 2 sides. It doesn't have any debit and credit because it is a statement. Liability, asset, right? Amount, and then balance sheet. As on 31st March 2016, right? ए क्लब, कोई क्लब का ए बैलेंस शीट है, सो हम लोग ट्रीट करना है। As I said, fund is the liability. What is the amount of fund? It is given in the question. Price fund is 40,000. Price fund is 40,000. पोस्ट कर चुके हैं हम लोग, क्योंकि इन्वेस्ट किए कि नहीं किए, इन्वेस्ट किए हैं। कितना इन्वेस्ट किए हैं? 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। कितना इन्वेस्ट किए हैं? सेम फंड कितना अमाउंट था उतना ही अमाउंट हम लोग इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। देन डोनेशन वी रिसीव्ड, हाउ मच वी डोनेशन रिसीव्ड? वी गॉट डोनेशन वी गॉट हाउ मच? सी द क्वेश्चन, डोनेशन इज 15,000। हमारा पास इनिशियली कितना पैसा था? 40,000 रुपीज था और 15,000 डोनेशन मिला, राइट। फिर इंटरेस्ट भी मिला होगा, इजंट इट? इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 10%, 4,000 होता। सो एड इंटरेस्ट अमाउंट इज 10% ऑफ 40,000 इज 4,000। अब अच्छे से हमने देखिए इंटरेस्ट कितना दिया हुआ, रिसीव कितना दिया हुआ है? ओनली 3,000। हाउ मच वी हैव टू रिसीव्ड? वी हैव टू रिसीव 4,000. इट मींस दैट 1,000 ड्यू है, 1,000 इज अक्रूड, राइट। सो 4,000 यू हैव टू राइट हियर। 4,000 हम लोग इंटरेस्ट मिलना है। कितना रिसीव हुआ अभी तक? 3,000 रिसीव हो चुका है और कितना बाकी है? 1,000 इज अक्रूड, दैट इज इंटरेस्ट अक्रूड। इंटरेस्ट अक्रूड विल बी 1,000. कैसा? Actually interest receivable is 4,000. How much we received? 3,000 we received. How much is outstanding here? Outstanding is 1,000. 1,000 मिलना बाकी है. That is accrued. Interest accrued is here 1,000 rupees. Interest accrued मिलना बाकी है. So it will be asset. Right? Price fund के साथ donation add किए. राइट, इंटरेस्ट ऐड किए, फिर देन क्या लेस करना है? लेस प्राइजेस अवॉर्डेड, हाउ मच? सी द क्वेश्चन, इट इज गिवन 20,000, राइट। क्लोज इट नाउ। 55, 59 minus 20, 39,000. That's all. Very easy question to solve. You can get easily 3 or 4 marks for the coming examinations, right? Let's solve another one treatment, right? So far we have learned 2 problems regarding fund based accounting, right? Initially we learned sports fund, after that we learned the treatment of prize fund, right? इतना काफी है ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। मैक्सिमम टफ इतना ही तक आएगा। सो इट इज इजी टू स्कोर द क्वेश्चन मार्क्स। ओके, नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट ट्रीटमेंट। द ट्रीटमेंट इज हाउ टू डील विथ सब्सक्रिप्शन।
सब्सक्रिप्शन इज द मेजर एडजस्टमेंट। सब सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट सीख जाएंगे, एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विल बी इजी फॉर यू। सब्सक्रिप्शन इज द मेजर एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट आप सीख जाएंगे, द चैप्टर विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू, राइट। सो व्हाट इज सब्सक्रिप्शन? Subscription, you know, this is the revenue income. Is the revenue income. Subscription is the amount paid by the member routinely, regularly. It may be monthly or it may be annually. It is the regular income for the club, right? So here we prepare subscription appears both the account. इसमें भी आएगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी आएगा। सब्सक्रिप्शन इस पेमेंट्स अकाउंट में डेबिट साइड आएगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? यू नो, रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल द ईयर बैलेंसेस। इट कंसिस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर, करंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर। बट हमारा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली करंट ईयर को ही रिकॉर्ड करेगा। सो हमने यहाँ पर फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा अकाउंट्स को। इनको फिल्टर करके करंट ईयर को खाली लेकर जाएंगे, क्योंकि आउटस्टैंडिंग्स, एडवांसेस पेमेंट क्लब में नॉर्मली होगा। उसमें अब मान लीजिए एक क्लब में 100 रुपीज़ रिसीव किए हैं, 100 रुपीज़ का अंदर प्रीवियस ईयर का बैलेंस भी है, करंट ईयर का बैलेंस भी है और नेक्स्ट ईयर का बैलेंस भी है। सो ये साल का बैलेंस कितना है जानने के लिए वी हैव टू फिल्टर, and we have to, after filtering we have to post into the income and expenditure account. उसको एक फॉर्मेट है, मैं फॉर्मेट सिखाऊंगा फिर, देन प्रॉब्लम में जाएंगे, ठीक है। सो हाउ टू लर्न सब्सक्रिप्शन? द फॉर्मेट इज हियर। क्वेश्चन में दिया रहेगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द year as per receipt and payments account। ये अमाउंट कहाँ मेंशन होगा? receipt and payments account में दिया रहेगा ये अमाउंट। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, इसका अंदर प्रीवियस ईयर का बैलेंस भी है, करंट ईयर का बैलेंस भी है और नेक्स्ट ईयर का बैलेंस भी है। सो वी हैव टू एडजस्ट नाउ। द फॉर्मेट इज हियर, ऐड करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग मतलब दिस ईयर, इस साल में जो मिलने वाला पैसा को आप ऐड करो। यू हैव टू ऐड द करंट ईयर अमाउंट व्हिच इज रिसीवेबल। नेक्स्ट, लेस लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, लेस लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग। Or the format, you have to add current year outstanding, you have to less last year outstanding. After that, add last year advance, add last year advance, add कर चुके हैं। फिर then less current year advance, current year advance। So जो अमाउंट मिलेगा that amount belongs to income and expenditure account। तो रिसीट पेमेंट्स अकाउंट से हम लोग फिल्टर कर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो अमाउंट फीड होगा वो हम लोग निकाल दिए। मैं आपको समझाऊंगा क्यों ऐड किए, इसको क्यों लेस किए। अकाउंटेंसी में ऐसी फॉर्मेट को याद नहीं कर लेना, आपको हर एक का मीनिंग होता है, हर एक का रीजन होता है। सो अकॉर्डिंग टू दैट आप सीखने से जल्दी भूलेंगे नहीं। अब why we have to current year outstanding? Because this money belongs to current year। मान लीजिए करंट ईयर 2016 है, सो 2016 में मिलना था अमाउंट वो मिला नहीं, लेकिन वो करंट ईयर का अमाउंट है, एक साल का अमाउंट है। दैट्स व्हाई वी हैव टू ऐड, राइट। व्हाई वी हैव टू लेस लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग? लास्ट ईयर वो पैसा मिलना था, दैट मनी बिलोंग्स टू लास्ट ईयर, ये साल का नहीं है। ये साल मिला पैसा, लेकिन मनी कब मिलना था? लास्ट ईयर ही मिलना था, लेकिन अभी मिला है। सो वो गलती से मिल गया, लास्ट ईयर मिलना था अभी मिला, सो दैट मनी बिलोंग्स टू लास्ट ईयर, दैट्स व्हाई वी हैव टू लेस, ठीक है। दैट मनी बिलोंग्स टू 2015 बट वी रिसीव दिस ईयर, ये साल रिसीव हुआ, मनी बिलोंग्स टू लास्ट ईयर, दैट्स व्हाई वी डिडक्ट, ओके। नेक्स्ट,
लास्ट ईयर एडवांस, लास्ट ईयर एडवांस मिल गया, कब रिसीव हुआ एडवांस? 2015 में, किसके लिए? 2016 के लिए लास्ट ईयर एडवांस मिल गया। तो लास्ट ईयर एडवांस मिला कौन सा साल के लिए? ये साल के लिए, करंट ईयर के लिए। सो दैट मनी बिलोंग्स टू करंट ईयर, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू ऐड। We received money earlier in the previous year, but the money belongs to this year. That's why we have to add. Okay. Next, current year advance. ये सब हम लोग रिसीव कर रहे हैं for the next year. ये साल एडवांस हम रिसीव कर रहे हैं बोलने से, ये साल रिसीव कर रहे हैं बोलने से for the next year only, no? So we received advance for the current year for the next year. It means that money belongs to next year. So that's why we have to deduct the advance. Clear? That's why we have to less the current year advance. Once again, repeat the format. To calculate the amount to be credited in income and expenditure account, we have to follow this format. First, with the subscription received during the year, we have to add current year outstanding, we have to less last year outstanding, we have to less current year advance, we have to add last year advance. Isn't it? फॉर्मेट याद हो गया आपको? ये याद हो जाने से बहुत इजी हो जाए प्रॉब्लम स्टार्ट करने के लिए, ठीक है? सो लेट्स मूव टू द प्रॉब्लम। ये फॉर्मेट को रखकर एक प्रॉब्लम मूव करेंगे, राइट? ओके स्टूडेंट, मैं आई जस्ट रीड द क्वेश्चन। Receipt and payments account of a friends club showed that rupees 75,000 were received by way of subscription for the year ended 31st March 2017. Additional information was as under: subscription outstanding as on 31st March 2016 were 13,000. Subscription outstanding as on March 31st 2017 rupees 10,000. Subscription received in advance as on March 31st 2016 were rupees 8,000. Subscription received in advance as on 31st March 2017 were 20,000. So, how the information would appear in the final account for the year ended 31st March 2017 of Friends Club? जो information दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? How much we received by the way of subscription? 75,000 rupees. Total, how much we received? 75,000 rupees. So how much were outstanding in the current year? What is the current year? Actually, the current year is 17. March 17 is the current year. So solve the problem according to that. So I'm just give out the problem and we'll solve the problem in the whiteboard. Right? That's income and expenditure account, you know. It is a nominal account. It has two sides, debit side and credit side, right? Debit side shows expenditure, and credit side has income. So what is the nature of subscription? Is it income or expenditure? Subscription is the income for the club. So we have to post in the credit side, right? So we have to write here by subscription in the inner column. Okay, in the inner column we have to write 75,000. Now we have to filter the things. We have to add and less some items, right? One by one. Let's start with one first item. Here, subscription outstanding as on March 31st 2016 were 13,000. It means that last year outstanding March 31st 16 दिया हुआ है. So what is the current year? March 31st 2017 है. So 16 का outstanding है. That is last year outstanding है. This is the last year outstanding. Formula मुताबिक क्या करना है हम लोग को? Last year outstanding को less करना है. So we have to less outstanding 31st March 2017. Right? What is the amount? 13,000. Less कर चुके हैं. 16, sorry. So last year, no, 2016 outstanding is 13,000. After that, read the problem. Second one, subscription outstanding as on March 17, rupees 10,000. What is that? This is currently outstanding. Is sir मिलने वाला पैसा है. That money belongs to this year. So we have to add.
add outstanding 31st March 2017. The amount is 10,000. Last year को लेस करिए, current year को add कर दिए. Third, subscription received in advance. What is the amount of advance? 8,000 for the year 2016. It means that last year advance मिल चुका है. कौन से year के लिए? This year के लिए, for the current year के लिए. So we have to add advance. कौन से year के लिए? 31st 3/2016 का advance है. So that money belongs to this year. So 8,000 we have to add. Got it? Next. Subscription received in advance as on March 31st 17 were 20,000. This means we received this year advance. We received advance for the next year. So that money belongs to next year. So that's why we have to less. Advance 31st 3/2017. 20,000 लेस करना है. वो चेक कर लीजिए. आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग लेस, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड, लास्ट ईयर एडवांस ऐड, करंट ईयर एडवांस लेस. राइट. सो क्लोज करिए आप. कितना आएगा? 75 minus 13 add 10 add 8 or less 20, you will got 60,000 rupees. Means 75,000 rupees receive हुआ. According to receipt reports account, we got 75,000 rupees. But how much amount belongs to this year? This year it belongs to 60,000, which is 10,000 is outstanding. So हम लोग 50,000 ही receive हुआ, isn't it? So this is the way of solving subscription of membership subscription, right? So in the next class also we are going to learn some more way of solving adjustments, right? One more alternative is there, preparing subscription account. Preparing subscription account. Student, just we learn the treatment of subscription account and treatment of sports fund, right? Till then, thank you, bye.